नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नानक क्लासेस इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। और आज एक नया टॉपिक मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ, द मैन बुकर प्राइज़ इंडियन ऑथर्स। यस, ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम अगर होता है तो उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है कॉलेज लेक्चर प्रीवियस ईयर्स पेपर वाली, वो तो कंटिन्यू रहेगी और ये वीडियो जो है वो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगा, तो आज ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैन बुकर प्राइज़ इंडियन ऑथर्स हम देखेंगे। इंडियन ऑथर्स हु वॉन द बुकर प्राइज़, नंबर 1, V.S. Naipaul in 1971 for his novel In a Free State। सेकेंड नंबर पर है सलमान रुश्दी 1981 मिडनाइट्स चिल्ड्रन। ये दोनों राइटर जो हैं इनको डायस्पोरिक राइटर्स में इंक्लूड किया जाता है। अरुंधति रॉय 1997 द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दैट ये जो क्वेश्चन है अरुंधति रॉय को गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अलग अलग तरीक़ों से इन सेवरल एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैज़ बीन आस्क्ड। नेक्स्ट है किरण देसाई इन 2006 The Inheritance of Loss, and Arvind Adiga in 2008 for The White Tiger। अब हम इन सभी की वन बाय वन एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। In a Free State, In a Free State is a novel by V.S. Naipaul। इनका पूरा नाम है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल। It was published in 1971। It won that year's Booker Prize। The plot consists of a framing narrative and 3 short stories, One Out of Many, Tell Me Who to Kill, and the title story In a Free State। So जो third story है, that is the title story। The novel begins with a narrator on a ferry to Egypt and concludes many years later when he returns to Egypt as a tourist। The first tale concerns an Indian servant from Bombay। Santosh is the protagonist of One Out of Many and Indian Domestic। So 3 tales इसमें है अलग अलग नाम से। संतोष जो है वो प्रोटैगनिस्ट है फर्स्ट टेल का One Out of Many। The second story features an extended South Asian family in the rural West Indies। The narrator, an unnamed West Indian in Tell Me Who to Kill। So जो second story है Tell Me Who to Kill, उसका जो narrator है वो unnamed एक West Indian है, working in London to help his brother Dio get an education। The third story, जो कि title story है, is set in an African Great Lakes state that has recently acquired independence। Bobby, the protagonist of In a Free State। So जो third और title story है उसका protagonist है Bobby, a white homosexual civil servant who has emigrated from England to an Eastern African country। So that was all about In a Free State। अब हम बात करेंगे Midnight's Children, written by Salman Rushdie। Midnight's Children is a 1981 novel by Indian British writer Salman Rushdie about India's transition from British colonial rule to independence and partition। It is a post-colonial, postmodern and magical realistic story told by its chief protagonist Salim Sinai, set in the context of historical events। So ये जो story है post-colonial, postmodern और magical realism से related है और इसके जो protagonist का नाम है वो है सलीम सिनाई। The style of preserving history with fictional accounts is self-reflexive। और देखते हैं इसके बारे में। It won the Booker Prize and James Tate Black Memorial Prize in 1981। It was awarded the Booker of Booker's Prize and the Best All-Time Prize winners in 1993 and 2008 to celebrate the Booker Prize 25th and 40th anniversary। Midnight Children is a loose allegory for events in 1947 British Raj India and after the partition of India। The protagonist and narrator of the story is Salim Sinai, born at the exact moment when India became an independent country। तो सलीम सिनाई जो है उनका जन्म बिल्कुल उसी समय पर होता है जब इंडिया की इंडिपेंडेंस जो है उसकी घोषणा की जाती है।
He was born with telepathic powers as well as an enormous and constantly dripping nose with an extremely sensitive sense of smell. तो बहुत सारी मैजिकल पावर्स के साथ सलीम सिनाई जो है उनका जन्म होता है. The novel is divided into 3 books. The story moves in different parts of Indian subcontinent from Kashmir to Agra and then to Bombay, Lahore and Dhaka. Midnight Children has been called a watershed in post-independence development of Indian English novel. तो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉवल है ये. नेक्स्ट हम बात करेंगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग. अभी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कॉलेज लेक्चर के एग्ज़ाम 2016 में जो हुआ था और 2022 में जो हुआ था, 2022 में जो हुआ था, उन दोनों में ही अरुंधति रॉय से रिलेटेड इसी वर्क का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है. तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वर्क कितना इम्पॉर्टेंट है. इनसे इन डेप्थ क्वेश्चन जो है वो आगे भी पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं. द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज़ अ फैमिली ड्रामा नॉवल रिटन बाय इंडियन राइटर अरुंधति रॉय. इट इज़ रॉयज डेब्यू नॉवल. तो ये इनका पहला नॉवल था. अ स्टोरी अबाउट द चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऑफ फ्रेटर्नल ट्विन्स whose lives are destroyed by the love laws prevalent in 1960s Kerala, India. The novel also explores the lingering effects of casteism in India. Very important fact. It won the Booker Prize in 1997. The story is set in Ayammanam, part of Kottayam district in Kerala, India. So, inki setting, protagonist, inki publication date, everything you have to learn. The novel has a disjointed narrative. The temporal setting shifts back and forth between 1969, when fraternal twins Rahil and Esthapan, a boy, are 7 years old. तो देखिए ट्विंस की इसमें बात हो रही है, राहेल और एस्था. ठीक है, राहेल जो है शी इज़ अ गर्ल एंड एस्था जिसका पूरा नाम एस्थापन है वो एक बॉय है. उस टाइम वो 7 years old होते हैं. And 1993 when the twins are reunited. The main part of the plot takes place in 1969, a time of changes in ideology and influence. आगे और देखते हैं. The God of Small Things has 2 narrators. The first partial narrator is a part of the story and is even one of the protagonists, Rahel. तो राहेल जो है वो इसकी narrator है. The purpose is that this personage conveys a more specific point of view concerning any relevant aspect of the life of the twins. However, the rest of the narrative is in the third person. तो 2 narrator की हमने बात की है इसमें. फर्स्ट जो narrator है that is राहेल और जो दूसरा narrative है वो थर्ड person में है. आगे हम बात करेंगे The Inheritance of Loss. Inheritance of Loss is a second novel by Indian author Kiran Desai. It was first published in 2006. It won a number of awards including the Booker Prize for that year, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, the National Book Critics Circle Fiction Award in 2007 and the 2006 Vodafone Crossword Book Award. It was written over a period of 7 years after her first book, the critically acclaimed Hullabaloo in the Guava Orchard. Among its main themes are migration, living between 2 worlds, and between past and present. The story centers around the lives of Biju and Sai. तो देखिए बीजू और साई के बारे में ये स्टोरी है. बीजू एन इंडियन living in the United States, illegally son of a cook who works for Sai's grandfather. Sai is an orphan living in mountainous Kalimpong with her maternal grandfather Jemubhai Patel, the cook, and the dog named Mutt. The novel is set in Kalimpong and the United States 1986. The major themes running throughout The Inheritance of Loss is one closely related to colonialism and the effects of post-colonialism, the loss of identity and the way it travels through generation as the sense of loss. The Gorkha Land movement is used as the historic backdrop of the novel. तो ये भी जो फैक्ट है गोरखा लैंड मूवमेंट वाला ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट जो वर्क है वो है द वाइट टाइगर. आपने ज़रूर इसे जो
इस नॉवल पर आधारित जो मूवी है वो भी आपने देखी होगी. द वाइट टाइगर इज अ नॉवल बाय इंडियन ऑथर अरविंद अडिगा. It was published in 2008 and won the 40th Booker Prize for the same year. The novel provides a darkly humorous perspective of India's class struggle in a globalized world as told through a retrospective narration from Balram Halwai, a village boy. तो बलराम हलवाई जो है वो वाइट टाइगर का प्रोटैगनिस्ट है. The novel examines issue of Hindu religion, caste, loyalty, corruption, and poverty in India. Balram Halwai narrates his life in a letter written in 7 consecutive nights and addressed to the Chinese premier Wen Jiabao. तो ये बहुत important fact हो जाता है. In his letter, Balram explained how he, the son of a rickshaw puller, escaped a life of servitude to become a successful businessman, describing himself as an entrepreneur. So this was all about these 5 novels. Those won the Man Booker Prize, Indian authors. So thank you so much for watching this video and stay tuned for more. Please subscribe my channel if you have not subscribed. तो मिलते हैं next video में.